Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 65 for that topic body fluids and circulation. Now we have been learning regarding the circulatory pathways. We have seen in the last video open circulatory system and closed circulatory system, and that too with the differences. So do prepare that very properly. And another very important thing, don't ignore any article from the topic. If you want to score very nicely in NEET examination, then definitely you should not ignore even a minor article. Now another very important article you have to learn, that is the nature of heart in all vertebrates. So in all vertebrates, one thing is there, the heart is muscular, totally muscular, formed by the muscles only, there are no bones. And very important thing is that chambered, उसके chambers होते हैं, compartments होते हैं. Okay, so that is very important to learn that heart in all vertebrates. जो vertebrate subphylum हम देखते हैं उसमें हमने देखा है pisces है यानी fish, then that amphibians, evolutionary point of view से जाएंगे तो pisces, amphibians, reptilians, aves and बाद में mammals. Man at the peak point along with the woman, isn't it? So that all things we know. So all these vertebrates are peculiarly having that muscular heart there. That heart is never formed by any bone. ऐसा नहीं कि हार्ट को किसी बोन ने बनाया है, कोई बोन वहां पे है, ऐसा नहीं है. पत्थर दिल इंसान भी होगा तो भी उसका हार्ट जो है वो मस्कुलर ही होगा, उसके हार्ट में बोन्स नहीं होंगे. हम कहते हैं पत्थर दिल इंसान है. हाँ, हो सकता है मसल्स थोड़े ज्यादा थिक होंगे, isn't it? But particularly that is not having any bones. Then it is chambered. अब देखो इसमें फर्क कैसा कैसा है. पर्टिकुलरली अगर फर्स्ट हम लेते हैं पाइसेस यानी ऑल काइंड्स ऑफ द फिश, then we find that in fish they have got two chambered heart. फिश को दो चेम्बर्ड ही हार्ट है, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल. एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है. ओके, तो यहां पे क्या होता होगा, अभी देखो ये हार्ट अगर मैं निकालूंगा यार किसका, फिश का, then you will find that heart is having only two chambers. That one is atrium and other is ventricle. Okay, so what will happen there? That heart, atrium, we know that atrium always receives the deoxygenated blood from the body. Deoxygenated blood from the body received by atrium given to the ventricle, and ventricle pumps the blood. ये स्कीम आपको मालूम है, आपने बचपन से सीखा है. Atria receive the blood, pump it to the ventricle, ventricle pumps it to the body for distribution. So obviously एक important point यहाँ पे ये है that deoxygenated blood, जिसको हम impure blood भी कहते हैं, is pumped by heart, is pumped by ventricle to all parts, to all parts. Okay, अगर ऐसा हो रहा है तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड से पार्ट्स कैसा संभालेंगे? Then that will be and get oxygenated through gills. ये गिल्स का जो इंटरनल रेस्पिरेशन चलता है यानी वाटर अंदर आता है, एंड देन दैट इज सेंट टू द दिस डिफरेंट पार्ट्स देयर. ओके, सो दैट इज सेंट फॉर दैट गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइसेस के बारे में ध्यान में रखो.
that deoxygenated blood is pumped by ventricle in which of the following class? Deoxygenated blood is pumped by हार्ट, तो ये आंसर सही कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड एज द दैट पर्टिकुलरली पाइसेस और फिश, क्योंकि बाकी के एनिमल्स में ऐसा नहीं होगा, हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे 2 ही चेम्बर्स हैं और गिल्स जो रहते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है पाइसेस में। कंटिन्यूअस वाटर करंट इज कमिंग देयर और वाटर और ब्लड का कांटेक्ट होता है, देन दैट through the capillary, no doubt, then that what happened there, oxygen from water will enter into the blood, CO2 from that blood will go into the water, water will be given out. जो एयर का काम करता है एयर, वो यहाँ पे वाटर करता है, isn't it? Now another very important thing is the that after Pisces we is there amphibia, यानी frog. एम्फीबिया अगर लेते हैं तो यानी फ्रॉग जिसको हम कहेंगे, टोड भी है, ओके, फ्रॉग, टोड एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली इट हैज गॉट 3 चेम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस आर हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब एक चेम्बर कौन सा बढ़ गया है यहाँ पे, पर्टिकुलरली राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके, and 1 ventricle. So atria are 2 now, but ventricle is only 1. अब देखो यहां पे राइट एट्रियम इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from lungs, oxygenated blood, and that both bloods are pumped at the same time into the ventricle. तो क्या होगा वेंट्रिकल में? वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ द ब्लड विल बी पॉसिबल, मिक्सिंग ऑफ ब्लड may be possible there, it is possible there in the ventricle, and mixed blood is given out. Mixed blood is pumped from ventricle, pumped by ventricle. तो ये कैसे निभाएंगे अभी? मिक्स ब्लड यानी प्योर एंड इम्प्योर। अगर ऐसी बात हमारे साथ होगी देन दैट विल बी वेरी डेंजरस, ओके, बट हियर इट इज हैपनिंग। तो मिक्स ब्लड भी भेजा तो चलता है, क्यों चलता है? Because you know that skin can also carry out respiration called the cutaneous respiration and takes oxygen from air. हमें वो नहीं है, वो कैरेक्टर हमको नहीं है। Cutaneous respiration is possible in amphibians, and due to that cutaneous respiration, even though the mixed blood is given that, it is okay. तो समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। अब तीसरा जो है वो रेप्टिलिया। रेप्टिलियंस में क्या होता है देखो, इन रेप्टिलिया पर्टिकुलरली यानी स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड ऑल, स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, सो ऑल रेप्टिलियंस एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को अगर हम एक्सेप्शन मान लेंगे, मगर तो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल ऑल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, उनको भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है, वैसा ही है, ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल ऑल आर हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट। सो सेम एज इन केस ऑफ द एम्फीबिया, दैट विल बी देयर एम्फीबियंस, एज जो होगा वही उनके साथ होगा। राइट एट्रियम विल रिसीव द इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and then the mixed blood will be given to the ventricle because दोनों blood एक साथ आएंगे and mixed blood is pumped by the ventricle, and due to cutaneous respiration the things will be that normal there, okay. Oxygen will be taken from what is say that the
skin, through the skin. Okay. Now another is there, aves and mammals एक साथ ही लेंगे अभी. Aves and mammals, and ये जो हमने लिया है क्रोकोडाइल, जो एक्सेप्शन में छोड़ दिया था रेप्टाइल. So all have 4 chambered heart. सबको हमको 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो भी हमको कम लगते हैं मुझे तो. ऑल आर हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट. कौन से 4 चेम्बर हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल and left ventricle. And we are going to learn all that when we shall learn the heart of human being. अब 4 कंपार्टमेंट की वजह से क्या हो रहा है देखो दोस्तों. राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, विल डील विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and left part of the heart, left atrium and left ventricle, will deal with the oxygenated blood. And since they are separated by the septa partitions, right atrium, left atrium separated by interatrial partition, right ventricle, left ventricle by interventricular partition, there is never mixing of blood. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग कभी भी नहीं होता, and that are flowing separately. Okay, so this is very very advantageous. तो ये नेचर ऑफ हार्ट जो मैंने बताया है आपको, that you should follow very properly in comparison manner. It may be asked, compare that circulation in the fish and human being, man. तो आपको बताना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, या नीट के MCQ तो आ ही सकते हैं. So I am confident that you have understood this part very properly. This is very simple part. Again, I will say that don't ignore that. Even a minor point will also be considered for MCQ. Okay. So definitely like and share this video to your friend circle. We shall meet again in the next lecture. And do subscribe to my Cartesar Biology and Cartesar Biochemistry also channels. I am also having Cartesar Chemistry channel. Do follow that. Thanks a lot.